Hello friends, welcome to my classes, Komal classes, and myself Komal from An Academy. So you can join me on NTA UGC Net category on the India's largest learning platform, which is An Academy. So here we study about the research and research type. Here we also focus on the study on the basis of learn with easy tips and tricks. So you can follow my course the k.komal208-2682 and get 10% off on the plus courses. The Unacademy Plus offers you unlimited access all the plus educator and 24 hours learning facility and India's leading top educators. So here don't forget to subscribe my channel and also press the bell button. So here we start the lesson. This is my classes and I am also a verified educator on Unacademy and subscribe my channel which is daily classes held on 12 a.m. and this topic is MCQ most expected MCQ on the research aptitude for the NTA NET 2020. So what you waiting for? Let's crack it with Unacademy. So first question is, what is research? Basically research is made up two things. First one is your read and second one is your search. When we search the systematic investigation into and study of materials and sources, so we can call as the research. Basically research concludes the creative things. Whenever you want to study about to follow the rules and regulation within this research and the systematic understanding and work undertaken to increase the stack of knowledge. किसी भी चीज़ से रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो हमारी नॉलेज में इन्हांसमेंट होना कंपलसरी है. दैट्स व्हाई वी नोन एज द रिसर्च. The research is a made of two things and we have to improve our knowledge to devise new applications, right? So second question is that what is the type of research? The types of research basically are the categorized into two things. First one is your general classification and second one is your comparative classification. Most of the learners, most of the students have been very confusing terms in between these two. So I will classify all these terms one by one. So according to the general classification, the types of research are further classified into three things. First one is your fundamental research, second one is your applied research, and third one is your action research. And on the other hand, the comparative classification is categorized into four terms. First one descriptive research, analytic research, and second one is your applied versus fundamental, and third one is your quantitative versus qualitative, and fourth one is your conceptual versus empirical. So let's begin one by one and crack all these definitions too. So first one, what is the fundamental research? Basically fundamental research is a research where the we create the basic new things. A theory can be developed. Suppose for example the Einstein law, the law of gravitation. Suppose इसके पहले भी कोई भी चीज़ जो है वो इन्वेंट नहीं हुई है. जैसे सपोज दो पत्थरों को रगड़ने से हमें क्या फायर क्रिएट होती है, राइट? तो ये सबसे पहले जो फायर क्रिएट हो रही थी वो क्या थी, एक नई चीज़ थी. तो दैट इज द फंडामेंटल थ्योरी. और ये फंडामेंटल थ्योरी कहाँ से निकल के आई थी? न्यू थिंग्स से. सो दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल रिसर्च. इट इज ऑल्सो नोन एज द प्योर basic research and the main motivation here is to expand man's knowledge. कोई भी चीज जो है वो एकदम न्यूली क्रिएट होती है तो दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल रिसर्च. देन आफ्टर दैट द अप्लाइड रिसर्च. जहाँ भी हम फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाइड करते हैं, द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज द अप्लाइड रिसर्च. बेसिकली द मोटिवेशन ऑफ द अप्लाइड रिसर्च इज टू डिजाइन टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. सपोज इन अ यूनिवर्सिटी देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स एज वेल. तो ये यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? यूनिवर्सिटी सॉल्व करेगी. बट इन अ यूनिवर्सिटी देयर आर सेवरल कॉलेजेस एंड सेवरल इंस्टीट्यूशंस. तो अगर इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो इंस्टीट्यूशन करेगा. आई जस्ट क्लैरिफाई ऑल दीज टर्म्स विद द एक्शन रिसर्च. बेसिकली जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो क्या होती है? ब्रॉड लेवल पे होती है, राइट? द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है?
देन एक्शन रिसर्च में सपोज किसी भी क्लास में कोई भी नॉइज क्रिएट होती है या कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो क्या होता है उसका टीचर तुरंत एक्शन ले लेता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन रिसर्च। यानी जो हमारे कंट्रोल में है इमीडिएट हम उसको चेंज कर लेते हैं एकदम स्मॉल लेवल पे, वो हो जाती है एक्शन रिसर्च। बट इन अप्लाइड रिसर्च वी collectivity data can be used for the solve the problem in a broad level. Hope you understand well. And second one is the research types based on the comparative classification. Here we comparative all these important terms, and every time your UGC and NTA net ask these type of question in a one or two type of question may be asked every time. So this is very important. First, a descriptive. Descriptive means describe. Describe what you can be described when describe research basically include the survey. Survey means whenever you find the all type of surveys, fact finding inquiries of the different kind. So this is called as the descriptive research. Fine. The major purpose of the descriptive research to exist at the present in a social science. Basically, these types of research can be used, and the business research we quite often the term ex post facto. What is the ex post facto? It is a type of descriptive where the no control over the variables, right? If you want to more, to comment on my channel. So we definitely provide the separate lesson on the ex post facto. And basically ex post facto study also includes the attempts by the researchers to discover causes when they cannot be continued. Okay, and whereas the analytical research can be used the facts information जो कि हमें already given होते हैं, already available होते हैं, right? So facts and information that is also known as the already available, and analyze these to make a critical evaluation of the material. Okay friends, so let's move ahead. Now the second most important types of research on the comparative study, that is the quantitative and qualitative. So as the name suggests, the quantitative and the qualitative, here is the two terms which is belongs to a research or the type of qualitative and the quantitative, where the qualitative data typically consist of the words, and whereas the quantitative data typically consists of the number. When we talk about the number, we use the quantitative. What is the quantity of that, right? And the basically qualitative research is used for the finding the facts and scientific method for the observation, and whereas the quantitative is the purpose for explain, predict or control phenomena on the focus of collection numerical data hypothesis. Basically the quantitative research is the deductive, and qualitative research is the inductive. Okay, so next topic is the conceptual versus empirical. When we use the conceptual analysis is considered as the analytical, as the researcher are vying in empirical analysis. Means क्या हो गया इसका कि जब भी हम रिसर्च को परफॉर्म करने जाते हैं, वेयर सपोज हमें एक रूरल एरिया में भेजा जाता है और वहाँ पे हमको कुछ स्टडी करने के लिए दिया जाता है, तो हम दो तरीके से स्टडी प्रोवाइड करते हैं। एक होता है ये क्रॉस सेक्शनल और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन जो होते हैं वो टाइम टू टाइम पे जो है वो चेंज नहीं होते। एक बार हमने उसको कलेक्ट कर लिया और फिर हम दूसरे टाइम पे दूसरे डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आपस में उन दोनों को मैच करेंगे। वेयरएज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम क्या करते हैं कि उसी डेटा को हम क्या करते हैं ओवर टाइम, जैसे हमारा टाइम हो गया हमने उसको स्किप करके फिर दूसरा डेटा कलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या होता है रिसर्च में बहुत ही अफेक्शन पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल को चेंज कर, जैसे सपोज इस मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन को पहले ट्राई किया जाता है किसी दूसरे चीज़ पे, फिर किसी दूसरे कुछ टाइम पीरियड बाद हम किसी दूसरी चीज़ पे ट्राई करते हैं, तो क्या हुआ उसके और अच्छे इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं और खराब इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से रिसर्च को ची जाती है, एक तो कॉन्सेप्चुअल जो प्योर फंडामेंटल रिसर्च से ली जाती है, दूसरी होती है एम्पेरिकल जो हम हाइपोथेसिस करते हैं ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे। So guys, hope you understand all these terms very carefully, and don't skip to revise all these terms, because these terms are very important for the exam point of view. So thank you for listening me, giving your valuable time. If you don't follow me until so, subscribe my channel, subscribe my classes for further
अपडेट्स एंड रेगुलर अपडेट्स। मैं रात को डेली 12 बजे जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेके आती हूँ। सो बिल्कुल भी मेरे चैनल को स्किप मत करिएगा एंड प्रेस बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।